Namaste everyone. Aarambh Yoga Institute welcomes you all for the month-long celebration of International Women's Day 2023. Let us start this beautiful program by a spiritual touch of the divine. Sit in a comfortable posture. Hands in Namaste. Close your eyes. Take a deep breath in. Oh. Breathe in. Oh. Breathe in. Oh. Om Trayambagam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarugamiva Bandhanat Mrityurmokshiyamagada. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, cup your eyes, gently remove your hands and open. I am Rashmi from Aarambh Yoga Institute. A very good evening to one and all. A very warm welcome to all of you for this yoga session on the occasion of International Women's Day 2023. Women are competent, dynamic at work, versatile, successful, and above all, caring and affectionate. They are the super glue that hold many pieces of life together. While maintaining work-life balance, women get stretched and stressed. While they look after everyone around them, who looks after them? Keeping this question in mind and special occasion of Women's Day 2023, Aarambh Yoga Institute is celebrating whole month of March as International Women's Day 2023 by organizing a series of yogic practices and knowledge sessions conducted by yoga sadhaks. To begin with, I would like to give some insights about Aarambh Yoga Institute. Aarambh Yoga Institute, Kantivali, Mumbai, is an ISO 9001 certified institute with international standards and with recognition of Yoga Certification Board under Ministry of AYUSH and is running as an educational wing of Aarambh Yoga Foundation, which is a public charitable trust registered under Bombay Charitable Trust Act. Aarambh Yoga Institute is a trusted yoga institute which works to enlighten the world, especially the young aspirants, with quality education, training, and guidance in yoga teaching profession. We introduce them to the real essence of yoga and benefits of introducing and applying the yogic principles and practices to their lifestyle. It results in improved balance of an individual on multiple aspects of life, hence creating a better society. Now, let me share the other major activities being conducted at Aarambh Yoga Institute. Regular yoga classes every day, early in the morning, late morning, and late afternoon on various days. Advanced yoga, power yoga, society yoga, corporate yoga, partner yoga, and pregnancy yoga class under the guidance of a yoga expert and a doctor. Aarambh Yoga is also conducting professional certification courses like yoga teacher training courses and preparation courses for YCB, that is Yoga Certification Board, from level 1 to level 4. We also conduct the coaching and guidance program towards
UGC NET JRF exam preparation. Let me now share few words about the force behind Aarambh Yoga Institute. Our director, Sushma Maurya Madam. She is qualified professor awarded by University Grand Commission, India. Her educational qualifications are MA in Education, Diploma in Education, MA in Yoga Shastra, Postgraduate Diploma in Yogic Science, Foundation course in Yoga, Madhyama Yoga Shiksha Teacher Training course. She has been honored with Yoga Shri Award by Indian Young Olympian Federation and Patanjali College of Yoga and Research Center. Sushma Madam is certified yoga teacher for all the 4 levels and a lead yoga examiner of Yoga Certification Board, which comes under the Ministry of AYUSH, Government of India. That's not all. She's a karate champion holding black belt. Before starting the Aarambh Yoga Institute for imparting ancient knowledge of yoga for the benefits of our society, she has served to various celebrities and well-known personalities of different walks of life. She has been working in association with various renowned institutes, corporates, schools, NGOs, gymkhanas, and clubs for more than 15 years. Sushma Madam takes Aarambh Yoga Institute as a medium to inspire and encourage young generation to consider yoga teaching as a mainstream profession. She aspires to take this holistic health resource to every home to make it our life's integral part. So, let's begin our today's yoga session on hypertension and its yogic management. It's my privilege and honor to introduce Dr. Suhas Merchant sir, who will be taking you through today's yoga session on hypertension yogic management. He has joined us online from Nasik, Maharashtra. He has done his bachelor's in dental science and bachelor's in mass communication and journalism. He is also a practicing dental surgeon. And in the arena of yoga, he is a certified yoga instructor, yoga evaluator, and a yoga master. He is also a therapeutic yoga consultant. Without any further ado, may I request Dr. Suhas sir to take over and guide you all on today's yoga session. Please fill your valuable feedback on the session in the feedback form, which will be shared in the chat box. Now, over to Dr. Suhas sir for today's session. Happy Women's Day, happy learning, stay fit and stay safe. Thank you. Sir, I think you're on mute. Yeah. Oh, so hello, Vishnu sir. Hello, sir. We were students when we studied some yoga practices and some when we appeared for some exams. So first of all, I thank Sushma ma'am for giving me the opportunity to deliver some minutes in this session. I thank Rashmi for introducing me. And now let us start our session. Are there any doctors in this session? No, okay, no problem. So today we talk about the hypertension. What a hypertension is, it's a very simple thing. Hyper is high and tension is the tension. So the definition is very simple, hypertension. So our body, our full body is regulated by our brain, and there is circulation of blood throughout our body. The blood circulates starts from the heart, and it gives the blood is supplied to every part of our body, brain,
the all systems, the respiratory system, circulatory systems, the gastrointestinal system, everything is supplied by the nutrients are taken by the from the blood, and they are supplied to the tissues, the cells, and everything, and thus our body functions. And all systems, they work in coherence, they work with each other in one frequency. So what is blood pressure? Blood pressure is a very simple thing. If you must have seen a tank, a water tank anywhere. Also, you can see municipal water tank. Some water is filled in the tank, and the water is distributed through the pipes. There's a bigger pipe. The pipe becomes smaller, and the tap water that comes to your home, it's in a small quantity, and you can see the huge amount of reservoir in the tank. So, like that, our body has a heart. The heart is like a tank. And there are blood vessels. There are big blood vessels. They convert to small blood vessels, and ultimately they end into capillaries, which are very, very thin blood vessels. These capillaries are at the end of the part of our organs. The capillaries are there also in the respiratory systems. So accordingly, when the heart starts pumping, it starts pumping the blood. It goes to the aorta. From aorta, it goes to the different vessels, and then it goes to various parts of the body. And in return, there is an exchange of oxygen, there is an exchange of nutrients to the cells and to the organs. And from there, the veins, they collect the blood, and the blood flows from the different organs, the peripheral organs, and they come via different veins connect together, and through infravena cava and supravena cava, the blood is pushed into the heart. So this is a very simple anatomy to describe of the heart before we go to the actual blood pressure symptoms. So our body works on that thing. The heart is continuously pumping the blood. So all these things are correlated. The heart, the blood, and your physical and the mental exertions. These are very important things to consider the blood pressure. So blood pressure, it is the pressure that is felt on the capillaries. When the blood flows through the heart and the veins, arteries, there's a pressure exerted on the walls, arterial walls, the walls of the vessels, blood vessels. So this is the pressure that is exerted on the blood vessels. But this pressure changes when there are some changes in our body, or there are some disparities where it is very difficult to understand the things why blood pressure is occurred. You have to study the causes for that thing. But before that, let us see. There is you must have heard the systolic blood pressure and the diastolic blood pressure. The systolic blood pressure is the contraction of the heart, means that is the upper pressure, and diastolic is a lower pressure, means it is the expansion of the heart. The heart constricts and expands. So when it constricts, that is systolic pressure. When it dilates, it is a diastolic pressure. So it is measured, the value, the normal value in a healthy individual is systolic is 120 mm of Hg, and the diastolic is 80 mm of Hg. That is what is measured in this. And it is measured by blood pressure machine. All of you must have seen. It's either a sphygmomanometer of the other version where there is a mercury. When you press that pump, the mercury goes up, and other things are recently available for the electronic things. But the reliable blood pressure apparatus is usually sphygmomanometer, the one which you must have seen when some doctors were using some time back. Now all people are using electronic, but these are the reliable things. So when there is a difference in the systolic and diastolic blood pressure, then we say that there is a increase in the blood pressure or the decrease in the blood pressure. So when the blood pressure level increases above 120 or systolic or the diastolic above 80, then it is considered to be a blood pressure. But why a blood pressure? Why a blood pressure? The blood pressure, why blood pressure increases? Blood pressure has got some significance in our day-to-day life. Blood pressure, to increase the blood pressure, there are many factors. There are many factors means after physical exertion, the blood pressure increases. And other things, when there is a stress, when there is a mental stress, then also the blood pressure increases. Nowadays, the reason for increasing the blood pressure is mostly a mental stress. So when you go to a doctor, the doctor
See, there are various reasons to for increasing the blood pressure. So when you run, when you walk, when you are in a sitting position, the blood pressure is a bit higher. When you are in a sleeping position, the blood pressure is not that high. So when you go to a doctor, the doctor examines you, usually asks you what is your lifestyle, this thing, that thing. But usually nowadays the lifestyle diseases are, because this is one of the lifestyle disease. We will not say it's exactly a disease. Hypertension is a symptom. Hypertension is not a disease; it's a symptom. It is a symptom related to your mental stress. So why the mental stress increases? So nowadays we must be seeing the mental stress is everywhere. When you go out of your home, there is a mental stress. When you drive a vehicle, when you drive any two-wheeler, four-wheeler, anything, when you go to the office, and there are stresses in your relations also, in your home, friends, etc., etc. There are many things. Above all, when there are some diseases, then also it affects the blood pressure, especially hypertension, some kidney diseases. Also, they give rise to a pressure on your blood vessels, and that increases the blood pressure. One of the other reasons is also there. So when the blood flows through your blood vessels, no, there is a resistance to the blood flowing in the vessels. Why there is a resistance? The resistance is because of some deposition of some material in your blood vessels. Why this gets deposited? There are many reasons. Sometimes some people say that it's because of the increase in the cholesterol level, that there's some deposition. So people go for, when there is some chest pain, they go to the doctor. The doctor examines it and he said, there are some depositions in your coronary arteries. Why there are depositions in coronary arteries? There are many diseases. We'll talk about that thing. But these are some reasons that give rise to blood pressure, rise in the blood pressure. If anyone wants in Hindi or Marathi, let me know. Hindi, Marathi, Gujarati, you can raise your hand. Sir, you can do combination Hindi English. Yeah, ठीक है, I'll do. So वो जो कैसे है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, कि ब्लड प्रेशर की काफी रीजंस है. ब्लड प्रेशर बेसिकली ज्यादा तो मेंटल स्ट्रेस से ही बढ़ता है. वो बढ़ने के लिए काफी चीजें होती है. तो उसके लिए जो हमारे जो ब्लड वेसल्स है, जो टर्मिनल ब्लड वेसल्स है, उसमें वो जो जमा होता है, कुछ प्लाक उसको बोलते हैं, वो क्यों जमा होता है, उसके वेरियस रीजंस है. तो उसके हिसाब से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है. और ब्लड प्रेशर ऐसा डिसीज है कि हमें शुरुआत में मालूम ही नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर हुआ है, क्योंकि उसके सिम्टम्स इससे ज्यादा नहीं रहते हैं. Sometimes there is a headache, sometimes there is a dizziness. It depends what kind of symptoms are there. तो बाद में कभी कोई ध्यान में आता नहीं, लेकिन कभी कोई एकदम दर्द होने लगता है, ये होता है, तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है. डॉक्टर देखता है तो बोलता है तुम्हें ब्लड प्रेशर हुआ है. और ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है, इसका रीजन वो हमें ढूंढना चाहिए. तो देयर आर वेरी सिंपल थिंग. ब्लड प्रेशर क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारा ये जो रिलेशन है हार्ट का और नर्वस सिस्टम हमारा जो है हाइपोथैलेमस से ब्रेन में पार्ट होता है. हाइपोथैलेमस ये इसका रेगुलेशन जो है हमारे ब्लड प्रेशर का, यानी हार्ट में जो नर्व सप्लाई होता है उसका रेगुलेशन करता है. तो जैसे ही हमारा ब्रेन में कुछ स्ट्रेस हो जाता है, जैसे कुछ कंडीशन आती है, अभी बहुत बार हम जब कुछ हमारे ऊपर ऐसी कंडीशन आती है कि फाइट और फ्लाइट के कुछ सामने एब्रप्टली कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो वो टाइम पे हमारी रिएक्शन अलग होती है, हमारा एकदम राइज हो जाता है ब्लड प्रेशर. वो जब वो हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस नीचे सिग्नल भेजता है और हमारा ब्लड का पंपिंग ज्यादा शुरू हो जाता है. तो हाइपोथैलेमस से वो हार्ट पे जाता है और उस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है. इट्स बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस. दूसरी बात ऐसी है कि हमारा वो जब हाइपोथैलेमस बढ़ता है तो हमारा एड्रेनालिन बढ़ता है. जो किडनी है, किडनी से एड्रेनालिन बढ़ के वो एड्रेनालिन जो है वो, ये साइंटिफिक तुम्हें मालूम चाहिए कि क्यों होता है ये. तो एड्रेनालिन बढ़ता है और एड्रेनालिन से हमारा हार्ट का जो पंपिंग बढ़ जाता है, तो पंपिंग जब बढ़ जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर, जो आर्टरीज है उसके ऊपर ब्लड का प्रेशर आता है और ब्लड प्रेशर होता है. तो ये जैसे बहुत बढ़ गया तो इसके बहुत रिजल्ट्स, यानी द रिजल्ट समटाइम्स देयर इज अ स्ट्रोक, देयर आर मेनी थिंग्स, देयर इज हेमरेज इन द ब्लड, कुछ भी हो सकता है. तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जो योगिक में अभी काफी एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा हमने ले लिया है, लेकिन योगिक दृष्टि से हमें ये क्या करना चाहिए. तो कैसे है कि ब्लड प्रेशर में जो रहता है कि हमारा एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन ऑल्सो. अभी जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमें ऑक्सीजन ज्यादा लगता है, कि एक्साइटमेंट हो जाता है. अभी हम जब योगा करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल हमें कम लगती है, ऑक्सीजन कम लगता है, क्योंकि हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है. हम जब कोई क्रिया करते हैं, व्हेन वी डू सम योगा, व्हेन वी डू सम आसन, व्हेन वी डू सम बंद और एनीथिंग, ऐसी जो बातें हम योग निद्रा करते हैं, तो उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने में मदद होती है. तो अभी ये जो हम लाइफस्टाइल जो है हमारी,
तो इसमें हम बाद में कौन से आसन प्राणायाम इसमें बाद में आते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली हमने जो देखा है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है, डिसीजेस है, उसके हिसाब से हमारे ब्लड प्रेशर अभी काफी लोग हैं हमारे, मेरे मेनी पेशेंट्स कम टू मी, out of 10 patients, 8 patients have diabetes, 8 patients have blood pressure. So why there is an increase in this kinds of diseases? It is because of more of your mental stress, your lifestyle, your eating habits, all these things they contribute to your all these things. तो भी इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें हमें एक स्टेप बाय स्टेप जो योगिक प्रक्रिया है उसमें आसन आते हैं, प्राणायाम आता है, कुछ बंद आते हैं, तो इस तरीके से, और मेडिटेशन जैसे योग निद्रा भी है, मेडिटेशन भी है, ये सब बातें यदि हम करते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर में हमें काफी रिलीफ मिल सकता है। और ब्लड प्रेशर ऐसी चीज है कि वन शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी, वन सेल्फ, कि जैसे हम लोग काफी बार ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हमसे स्ट्रेस क्यों आ रहा है, हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं, बिकॉज एवरी टाइम वी रिएक्ट, हम रिस्पॉन्स नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। सामने वाला कोई भी आदमी गुस्सा होगा तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं, या कुछ भी बातें घर में होती है, बाहर होती है, रिलेशन में होती है, कहीं भी हमारा कुछ प्रोफेशन है तो उसमें बातें होती है, बिकॉज हम जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। जब रिएक्ट हो जाते हैं तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, एड्रेनलिन एक्टिव हो जाता है, तो फिर हार्ट जो है ज्यादा पंपिंग करने लगता है। कंटिन्यूअसली तुम यदि स्ट्रेस में है तो कंटिन्यूअसली ये सब बातें तुम्हारे हार्ट पे इफेक्ट करती है। और हाइपरटेंशन इफ इट इज अनट्रीटेड तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब होते हैं। तो हाइपरटेंशन हमें जब कुछ भी हो, व्हाट एवर थिंग्स आर देयर, वी मस्ट कंसिडर टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। तो कंट्रोल अभी कैसे कि व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, द डॉक्टर मस्ट मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर फॉर एटलीस्ट 6 or 8 days, then one can decide कि तुम्हें हाइपरटेंशन है या नहीं। if there is a continuous diastolic pressure above 90, continuous, if it is continuous, otherwise नहीं। ऐसे भी तुम कुछ स्ट्रेस में आ गए, भाग दौड़ करके आए तो 90 तक आ सकता है। अदरवाइज इफ इट इज कंटिन्यूअसली इवन इन रेस्ट पोजीशन 90, तो यू कैन कंसिडर इट टू बी अ हाइपरटेंसिव पेशेंट। जब तुम्हें मेडिसिन वगैरह डॉक्टर की विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर यू कैन टेक दोज मेडिसिन और एनीथिंग। लेकिन जब तुम्हें लगता है कि नहीं इतना नहीं है और सिम्टम्स, हमने थोड़ा माइंड काम किया, थोड़ा एक्सरसाइज किया, तो जब ये होता है तो हम लोग ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। अभी कम करने के लिए काफी चीजें हैं, उसमें मैंने बताया कि प्राणायाम है, ये है वो है। तो उसमें प्राणायाम में जो है पहले हम आसन में देखेंगे। तो आसन में जो छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे भी बहुत ओल्ड एज पेशेंट भी रहते हैं कि उनको भी हाइपरटेंशन रहता है, तो जब when there are some older patients, no, so you cannot give some extensive asanas or extensive vyayams. So in those patients we can do sukshma vyayam. Abhi jo what are the sukshma vyayams you must be knowing, but there are I just in short I will explain. The sukshma vyayams are just movements of the wrist, उसके बाद में हम लोग जो स्कंद संचालन बोलते हैं of the shoulders वो कर सकते हैं, रिस्ट मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जो छोटे छोटे है हैंड मूवमेंट्स है वो कर सकते हैं, और पाद संचालन जो है, नीचे अंगुली संचालन जो है वो कर सकते हैं। नेक, छोटी छोटी नेक मूवमेंट्स कर सकते हैं। अभी सूक्ष्म व्यायाम यू ऑल ऑफ मस्ट नोइंग कि अभी काफी आपको आ गए कि सूक्ष्म व्यायाम के काफी बेनिफिट्स हैं। सूक्ष्म व्यायाम हेल्प्स in removing the toxins those are present in your joints. So Sukshma Vyayam, that indirectly it helps you. Sukshma Vyayam. So Sukshma Vyayams are very important. For older patients, the Sukshma Vyayams are must. Because क्योंकि हम older patient के लिए बड़े बड़े आसन नहीं दे सकते, लेकिन वो लोग they can do all these Sukshma Vyayams. So primary things, and you will definitely get the results if you start doing it within 10 days. 10 days are sufficient to get the results by Sukshma Vyayam only and a Yoga Nidra. These are the very basic things. इसमें कुछ भी लगता नहीं है, यू कैन डू वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। योग निद्रा तो कोई भी कर सकता है, और ये जो सूक्ष्म व्यायाम है कहीं भी तुम कैसे भी, मेरे जैसे योगा टीचर है, हमारे काफी टीचर है, दे कैन टीच यू सूक्ष्म व्यायाम। अभी जो कुछ एल्डरली लेडीज है बीच में, या एल्डरली पेशेंट है, मेल फीमेल कोई भी, तो उसमें काफी छोटे छोटे हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, वक्रासन है, बाद में भुजंगासन है, मत्स्येंद्रासन है,
धनुरासन है, शलभासन है, वक्रासन के जितने मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आसन है वो हम कर गए तो इसमें से काफी हम लोग को बेनिफिट होता है। जितने तुम आसन में क्या लगता है कि we need less amount of oxygen, so the heart rate is reduced. So when there is a good amount of supply of the blood to the organisms, and there is not much of the pressure on the blood vessels and the blood capillaries, and it helps to reduce the blood pressure. The heart starts beating at a normal rhythm, so the blood pressure remains at a very optimum level. There is no increase in the blood pressure if you notice all these things. Then comes the pranayam. So pranayam is very important because circulation and oxygen, these are interrelated. Our blood goes to the lungs. From lungs there is an exchange of oxygen and carbon dioxide. हमारे lungs में carbon dioxide और oxygen का exchange होता है, और exchange होके वो जो blood है उसमें से वापस वो हमारे body की तरफ जाता है। तो ये जो exchange है तो उसमें हमने for a body to work or the tissues to work or the at a cellular level, जो हम बहुत हमारे छोटे छोटे cells रहते हैं, there are many trillions of cells in your body, तो वो trillion cells के लिए हमें ऑक्सीजन लगता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये ऑक्सीजन अच्छी तरह से हमारे एंड पार्ट तक जाता है, इसलिए प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्राणायाम में फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स उज्जयी प्राणायाम एक अच्छा प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम यू मस्ट बी नोइंग उज्जयी प्राणायाम जो है, तो उज्जयी प्राणायाम में हम लोग एक डीप ब्रेथ लेते हैं और जैसे हमारा थ्रोट है उससे आवाज करके जो है उसे एक्सलेशन करते हैं, विद इनहेल एंड एक्सहेल बाय मेकिंग the snoring like sound comes to your throat, and this is the way the Ujjayi pranayam is performed. In Ujjayi pranayam there is a indirect action on the cavernous अपना जो sinus है, वो sinus पे effect होके the signals are sent to the hypothalamus and the blood pressure is reduced. So Ujjayi pranayam everybody the elders must do. It's a very easy pranayam, so anyone can do the Ujjayi pranayam. Ujjayi pranayam also helps. Then Anulom Vilom is there. Anulom Vilom also helps. All pranayams help, but these things are very basic things. Then Anulom Vilom everyone knows because Baba Ramdev has made it famous. Everyone knows Anulom Vilom. Those who are watching TVs and everything, जो भी देखते हैं तो उन्हें अनुलोम विलोम सबको मालूम है। अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, ये सब जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम हमें ब्लड प्रेशर कम करने के लिए काफी यूजफुल होते हैं। उसके बाद में जो है एक शीतली प्राणायाम है। जो शीतली प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम में हम लोग जो लिप्स है उसमें से जो जब when we close your mouth, there is a gap in the teeth, we inhale through the mouth and we close the lips and we exhale through the nose. So this Shitali pranayam, this helps in reducing the hypertension to a large extent. So this is a very simple exercise of pranayam. So everybody can do, anybody can do. कि मैं ये जो शीतली प्राणायाम है उससे बहुत फायदा होता है। वैसे शीतकारी प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम भी हम लोग वो इट्स अ बिट कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट जाता है। तो वी रोल द टंग, we take we inhale through the mouth and then we exhale through the nose. So these pranayams are very important. These pranayams help in reducing the blood pressure. Then we come to the there are some, we can do some bandhas and this thing, but for a normal individual, no, these asanas and pranayams, they will give results. And above all, if you can do some walking. So while walking also, you can, by one step you can inhale, second step you can exhale. So this will also help you in the pranayam. So this will also give you a good exchange of oxygen and carbon dioxide in the lungs, and that will give you a very better results for the maintenance of your blood pressure.
But above the bottom line for hypertension is that you must control your emotions. Emotions means the stress in any form. So there is a stress in physical form also, but physical form also, if you take a rest, then the stress goes away. But for mental stress, it is very difficult to take out the mental stress. There are many people who cannot take out the mental stress. The mental stress की जाने के लिए ये जो है these asana, pranayams, these also they also help very well in reducing the hypertension. So all these yogasana, all these pranayams, all these things, they help you. इसमें कैसे है कि there are some relaxation methods. You must relax your mind. So in relaxation methods, there is a yoga nidra. Yoga nidra is very helpful in calming down your mind. तुम्हारा जो दिमाग है उसे शांत करने के लिए हमने योग निद्रा एक बहुत अच्छी प्रक्रिया में योगा ने दी है कि जिससे हम हमारा ब्लड प्रेशर काफी, यानी हमने कुछ भी नहीं किया, योग निद्रा किया तो भी हमारी काफी ये जो वजन है कम हो सकती है. तो योग निद्रा में इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. कोई भी हमें जो योग शिक्षक है वो हमें पढ़ा सकता है कि योग निद्रा कैसी करनी चाहिए. इट इज जस्ट लाइंग डाउन. योगासन जैसे हम योग निद्रा जैसे हम शवासन में करते हैं. शवासन एवरीबॉडी नोज के यू हैव टू लाई डाउन लाइक अ कॉर्प्स. शव जैसा हमें नीचे हमारे मैट पे सोना है, पूरा बॉडी रिलैक्स करके, और पूरा बॉडी रिलैक्स करके जैसे either you can put the music in the whatever system music system is there, या हमें कुछ योग शिक्षक हमें योग निद्रा करवाते हैं शवासन में. तो उसमें in that thing we relax each and every part of our body. जैसे हम पैर से लेके तो सर तक, मस्तिष्क तक हमें हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, हमारे मसल्स है, उसको हम रिलैक्स करते हैं. और धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए जो माइंड है उसको हम काम या क्वाइट करने की, या उसमें जो टेंशन है उसमें से, और उसमें कैसे कि ये जब और ब्रेन ट्रांसमिट रिलीजेस सम केमिकल्स, तो उसमें जो डोपामाइन है, सीरोटोनिन है, जो ये एंजाइम्स है, जो सिक्रीशंस है, ये सिक्रीशंस ज्यादा होते हैं. ये सिक्रीशंस हमारे सब दिमाग के काम करके दैट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट. यानी कि हमारे दिन में कामनेस आता है और बॉडी गेट्स रिलैक्स, हमें बहुत एनर्जेटिक लगता है, और इससे हमारे बॉडी में चेंजेस होके हमारे काफी ब्लड प्रेशर कम होने में काफी मदद होती है. हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं. उसमें कभी पहले मालूम नहीं था, कुछ 60s 70s में इतना रिसर्च नहीं हुआ था, लेकिन बाद में रिसर्च हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर के साथ में आवर ब्रेन सीक्रेट्स सम केमिकल्स. जो केमिकल्स है वो ये सब केमिकल्स हमें हमारे बॉडी में काम में आते हैं, और ये केमिकल्स ये सीक्रेट होते हैं कि इसका सब संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम, वो जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में काम करते रहते हैं. तो हमने ये देखना चाहिए कि हमारा बॉडी में इस तरह से कैसे संतुलन रहे. हाउ कैन वी बैलेंस ऑल दिस थिंग्स इन आवर बॉडी. तो जो योग निद्रा या शवासन है, ये तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रिलैक्सिंग योर माइंड. इससे हमारा मेंटल एफिशिएंसी बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है. दिस गिव्स वेरी गुड अमाउंट कामनेस देता है. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है वो अच्छे तरीके इंप्रूव हो जाता है. फिर हम जो है रिस्पॉन्स है उसको क्विकर रिस्पॉन्स दे सकते हैं. हमारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हमारा मेमोरी अच्छा स्ट्रांग हो जाता है, और फिजिकल एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है. जैसे हमारा कामनेस आता है तो फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ जाता है. तो वी कैन वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, गुड वे. फिर बाद में उसमें जो हमारा मेन स्ट्रीम बैलेंस, जो पूरी बैलेंस सिस्टम है हमारी, जो सब सिस्टम की, उसमें पूरा बैलेंस आ जाता है, और पूरा शरीर जो है हार्मनी में, योर बॉडी वर्क्स इन हार्मनी. और सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑल सिस्टम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. हमारे एक सिस्टम पे हो गया तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पे इफेक्ट होता है, वहां से एड्रेनल सीक्रेट होता है. इसे एक सिस्टम जो हमारा डाइजेस्टिव, हम यदि टेंशन में तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम नहीं करता है. तो इसे एक करके एक सिस्टम पे इसका इफेक्ट हो जाता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो स्ट्रेस लेवल हमारा कम होना चाहिए, तो उससे हमारे
जो बॉडी लेवल है ब्लड प्रेशर के वो कम होने में काफी मदद होती है। और दूसरी बात है हमारे डाइट की भी, जैसे कि हमारी सम पीपल, अभी कुछ यंग जनरेशन है वो तो जैसे हमारे योग साधक तो नहीं करते हैं, लेकिन बाकी जो यंग जनरेशन है वो जंक फूड है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, देयर आर मेनी थिंग्स, प्रोसेस्ड फूड्स आर वेरी बैड, one should not consume those foods, they are very bad for your health. हम जैसे काफी ब्रेड बेकरी प्रोडक्ट once in a while it's okay, but if you take it regularly then it really damages your body mind well. तो ये सब चीजें तो हमें कम करनी चाहिए। दूसरा, हमें बहुत बड़े बड़े फैड निकले हैं इसके न्यूट्रिशन के, ये आहार लो वो आहार लो, तुम ग्लूटेन मत खाओ, तुम ये मत खाओ, तुम वो मत खाओ। फिर कोई बोलता है यू गो फॉर मिलेट्स, यू टेक ये बाजरा, यू टेक जॉरी, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, ये फैट बहुत निकले हैं। बट आई एम टेलिंग यू, whatever is suitable to your body means the things that are grown around your in your where in your soil where you are born, where you are residing. This is the crop, the food that is grown in your that soil is good for your health. ऐसा कुछ नहीं तुम यही खाओ वही खाओ वही खाओ, कुछ जरूर नहीं है। कीप गुड लाइफस्टाइल, तो उससे तुम्हारे इसमें काफी फर्क पड़ जाता है। यू कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ। तो यू डोंट गो आफ्टर दिस फैट्स। इवन इन ओबेसिटी ऑल्सो, कभी चांस आया तो मैं ओबेसिटी पे एक बड़ा लेक्चर दूंगा। तो इवन ओबेसिटी ऑल्सो की क्या है क्या नहीं है, देर आर मेनी मिथ्स रिगार्डिंग ओबेसिटी ऑल्सो। ओबेसिटी में मेनी टाइम्स, अब ये थोड़ा विषयांतर हो गया है, तो एंडोक्राइनल सिस्टम्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत लोग खाते पीते डाइट करते वापस मोटे हो जाते हैं, बट देर आर सम एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस इन दोज बॉडीज, वो उसके लिए देख के फिर उसमें करना चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, फॉर द ब्लड प्रेशर दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे लगता है कि काफी हम बात कर चुके हैं, तो I conclude here. If you have some any questions, you can ask me in any language. I will answer. Sir, I think it's before time. Okay, no problem. No, it's okay. Okay, I mean we can have some interaction. Interaction in this room. We can get some questions, sir. How many participants are there, sir? 12 of them are there. 12. No problem. Any senior citizens, any questions? Sir, very nicely explained. I mean, you have touched upon all the points, especially related to diet, your lifestyle, and food. Everything very nice. If you can elaborate the functioning of nervous system, how it helps, or in with respect to controlling that would be very nice. Yeah, what happens now when there is a stress? No, our nervous system starts working. The signals are sent to the brain. In brain, there is a part hypothalamus. The hypothalamus conducts many of our activities, and there is a pituitary gland below hypothalamus. The pituitary gland also is important in controlling the nervous system. So hypothalamus sends signals. When the hypothalamus sends signals, there is an increase in the rush of the adrenaline. So these are conveyed to the heart muscles, the nervous system. And heart muscles, they start contracting fast. When they start contracting fast, there is a pressure of the blood is increased. There is a less oxygen is supplied, and when the less oxygen is supplied, no, there is a resistance to the blood vessels, the end blood vessels. And when there is a resistance to the end blood vessels, so the blood has a resistance to pass through the vessels, and then the blood pressure increases. This is the chemistry behind it. And even the signals are sent to the kidneys where there are adrenal glands. The adrenal glands also they secrete and they send the signal. The adrenal glands are away from the brain, but the adrenal glands, they send signal to the brain. And where is the secretion of the adrenaline from the adrenal glands? The adrenal glands act on the blood vessels, and there is an increase in the blood pressure. There is an increase in the flow of the blood. The blood gushes, and there is a resistance to the, because when we are excited, no, blood vessels is constricted.
When they were constricted now, then there is a resistance to the blood flowing to the capillaries, and there is a problem. Very nice. Thank you very much. Here, Neelam Sagar has raised the Yes. hand. Ma'am, you can Yes, ask sir. your question. Yes, sir. Sir, if we have any high blood pressure या low blood pressure, how to know मतलब क्या उसके लक्षण है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है विदाउट मशीन से हम लोग को कैसा मालूम पड़ेगा? हाँ, अभी कुछ इंडिविजुअल्स में कैसे है कि मालूम ही नहीं पड़ता है कुछ दिन के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हमें एक कंटिन्यूअस हेडेक होते रहता है, एक सिंपल टाइप वाला हेडेक होते रहता है, तो वो हेडेक होते रहता है, वो ध्यान में कभी आता नहीं, हम लोग गोली लेते हैं कि जब कंटिन्यूअस आपको हेडेक हो रहा है या फिर एक माइग्रेन आता है, अर्धशिशु होता है, उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर बाद में आपको बहुत बार अनइजीनेस लगता है, या फिर आप कहीं थोड़ा जाके आते हैं, घूम के आते हैं, थोड़ा स्ट्रेस होता है तो आपको थोड़ा एक गिडीनेस या चक्कर या कुछ भी ऐसे हो सकता है, तो उस टाइम पे समझना कि हमें थोड़ा कुछ भी जरूरी होगा। और जो हेडेक है वो कंटिन्यूस है, यदि कुछ स्ट्रेस आया तुम्हारे ध्यान में आता है कि वाला टाइप का हेडेक हो रहा है और कंटिन्यूस यदि होता है तो फिर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अच्छा सर, इसी से लो और हाई ब्लड प्रेशर का मालूम पड़ता है क्या? हाँ, जब वो जो गिनते हैं ना ब्लड प्रेशर के इसके ऊपर जो नॉर्मल लेवल रहता है 120, और ऐसे अभी कैसे है कि थोड़ा जब कोई हमारी उम्र बढ़ जाती है ना तो 120 नहीं रहता है, हमारा 140 भी हो जाता है, तो वो हमारा नॉर्मल लेवल रहता है 140 जो है। और तुम्हारा जो नीचे जो डायस्टोलिक के नीचे का ब्लड प्रेशर रहता है ना, तो वो कभी 90 के साथ रहा, 90 से, यानी जैसे तुमने आज किया ब्लड प्रेशर 10 दिन से कर रहे हो, 15 दिन से कर रहे हो, यदि 90 ही है वो 1 महीने के बाद में भी, तो समझ लेना कि आपको हाइपरटेंशन है। फिर उसके हिसाब से आपने कुछ वो जो आपके फिजिशियन या डॉक्टर है वो आपको गोलियां दवाइयां प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो उस हिसाब से हमने वो गोलियां दवाई लेनी चाहिए। और सतत हमने अभी मैं इतना जो लेक्चर में बोला उस तरीके से हमने वो जो हमारे दिमाग पे मस्तिष्क पे जो कुछ भी कठिनाइयां या स्ट्रेस या चिंता आती है तो चिंता का हमें कुछ तो भी निराकरण करना चाहिए। वो चिंता जो है उसका हमें कुछ तो भी उसमें से कुछ तो भी सुझाव लाना चाहिए कि चिंता क्यों हो रही है, उसे कैसे कम होना चाहिए, कभी भी कैसे भी हो। ओके सर, थैंक यू सर। सर, या ये बीपी कंट्रोल में किडनीज का क्या रोल है? हाँ, बीपी कंट्रोल में किडनीज का ऐसे डायरेक्ट रोल नहीं, किडनी स्ट्रेस में वो बढ़ाता है जो एड्रेनलिन बढ़ता है जब, लेकिन ऐसे ही यदि तुम्हें कंटिन्यूअस तुम्हारा ब्लड प्रेशर तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है तो जब वो हार्ट भी हो सकता है, बाकी चीजें भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जब वो किडनी पे प्रेशर आता है क्योंकि किडनी से फिल्टर होके ब्लड वापस ब्लड के हमारे हार्ट की तरफ जाता है, तो वो जो आता है वो उसके हिसाब से हमारे किडनी पे प्रेशर आके किडनी से वो हमारे ब्रेन से सिग्नल भेज जाते हैं और वो उस तरीके से वो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। सर मुझे ये पूछना था कि ये नर्वस सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रो वो इलेक्ट्रिक वो करता है और एंडोक्राइन जो है वो केमिकली वर्क करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल वाला तो समझ में आ रहा है कि वो हाइपरटेंशन बढ़ाता है, पर एंडोक्राइन में ये केमिकली कैसे स्टिमुलेट मतलब वो जो नर्व है ना, वो जो नर्व होता है वो नर्व पे जो है वो जो केमिकल्स रहते हैं ना उसकी एक्शन होती है, ये बहुत माइनर रहता है, ऐसे बड़े बड़े पैमाने पे दिखता नहीं है हमें कि वो सीक्रेट हो रहा है, ये बहुत सूक्ष्म रहता है। तो वो जो है वो जो हमारी सिस्टम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, ट्रांसमीटर रहते हैं वो एक्सॉन डेंड्राइट, वो जो एक जंक्शन रहते हैं एक्सॉन डेंड्राइट नर्वस सिस्टम में, तो वो जो सिनेप वहाँ जो कनेक्ट होते हैं जहाँ से हमें वो सिग्नल ब्रेन भेजता है, तो वहाँ ये उस जगह पे ये सिक्रेशंस काम करते हैं केमिकल्स हमारे, और वो केमिकल से वो जो नर्वस सिस्टम है उससे वहाँ आखिरी तक वो कंडक्शन होता है। जैसे हमारे रेल की पटरी में मुझे कान लगाते हो लंबे से वो गाड़ी आती तो मैं वो कान में सुनाई देता है, तो वो वैसे वो कंडक्शन होते रहता है। थैंक यू सर। नीलम जी, यू हैड आस्क्ड कि वो लक्षण कैसे दिखते हैं क्या बोला है, तो नॉर्मली कैसा है, आई मीन अबाउट 10 साल पहले आई ऑल्सो हैव गॉन थ्रू द सिमिलर थिंग, तो क्या होता था एक आध बार मैंने गोली खाने में देरी की तो ऐसा लग रहा था कि सर भारी, जैसे सर ने बताया, आंख के सामने थोड़ा सा धुंधला सा दिखता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ हल्का सा पर्दा सा छा रहा है,
तो ये, लेकिन कभी मालूम है क्या, ये हमारा बॉडी अवेयरनेस इंक्रीज होता है ना, तभी हमको ये पता चलता है, लेकिन बहुत बार हमको पता ही नहीं चलता है कि ये सब चीज हो रही करके हमारे साथ। सो वंस योर बॉडी अवेयरनेस लेवल इंक्रीजेस तो पता चलता है। तो पहले मुझे समझ में नहीं आता था, बट व्हेन वी वर स्टार्टेड डूइंग योगा तो अवेयरनेस बढ़ा। तो हाँ अभी तो द मोमेंट इवन हमारा जो वॉक करके आते हैं तभी हमको मालूम होता है, थोड़ा सा बॉडी अवेयरनेस बढ़ गया ना, तो ये ऑटोमेटिकली के लक्षण इसके, लोग में चक्कर आता है, हाई में गिडीनेस फील होता है, सर भारी होता है, आंख में दिखने में तकलीफ होती है, सब। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू एनहांस योर बॉडी अवेयरनेस। हाई ब्लड प्रेशर में भी चक्कर आता है ना, ऐसा अंधेरा आता है, चक्कर आता है, गिडीनेस लगता है। हाँ, अच्छा सर, क्योंकि मैं ना कभी भी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, फिर हाँ। सडनली ऊपर मतलब उठ जाती है, ऐसा जैसे कि अपन सिटिंग का एक्सरसाइज किया, फिर सडनली मैं मतलब खड़ी हो गई, तो फिर थोड़ा सा मतलब हल्का सा सिर में लगता है चक्कर जैसा, हल्का सा। हाँ, तो वो कैसे कि तुम्हारा पोस्चर चेंज होता है ना, जैसे तुम सिटिंग में थे तो ये कम था, तुम जैसे खड़े हो गए उठ के ना, तो तुम्हारे हाँ इसमें वेरिएशन हो जाता है। हाँ, लेकिन आपने स्लोली। है ना, ये जो है ना, आपने कुछ जो बेंडिंग के है ना, या सर्वांगासन या ऐसे ऐसे आसन आपने नहीं करने चाहिए, एटलीस्ट फिलहाल तो भी, जब तक जो कंट्रोल में आता है। आपने जो है सिंपल में जो बताया अभी, कुछ धनुरासन है, शलभासन है, हाँ भुजंगासन है, जो त्रिकोणासन है, बाकी ऐसी जो वीरासन है, तो ये जो आसन है ना, ये आपने करने चाहिए। तो ये जो आप बेंडिंग वगैरह करोगे तो आपको वो, अभी ब्लड प्रेशर होगा तो आपको बढ़ेगा ही, लेकिन आप जैसे धीरे धीरे कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे फिर वो आपका ब्लड प्रेशर आपके ध्यान में आएगा कि अब मैं खड़ी होती तो मुझे अब वो चक्कर सा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो हाँ सडन चेंज करोगे तो चेंज हो जाता है। हाँ, तो पहले आप ज्यादा होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि एक दो बार मैंने नोट किया, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज कर रही हूँ, सडनली कोई आया तो फिर मेरे को तुरंत ही भागना पड़ा, तब भी ऐसा होता है। वैसा आराम से उठेंगे तो नहीं होता है। नहीं, आपसे वहाँ आराम से ही करो, और कुछ आप बड़े ऐसे जो ऐसे डिफिकल्ट आसन है वो मत कीजिए, शीर्षासन है, सर्वांगासन है, ऐसे आसन मत कीजिए, सिंपल सिंपल है वही कीजिए फिलहाल। फिर आपको जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको बढ़ाना है आपको। ओके सर, थैंक यू सर। सर, ये हाई ब्लड प्रेशर, ये हाइपरटेंशन का और सोडियम का कुछ रिलेशन है क्या, कि सोडियम ज्यादा खाने से ऐसा क्या? हाँ, जो सोडियम है ना, सोडियम जो है हमारे वो भी नर्व पे काम करता है। तो सोडियम ज्यादा हो गया तो हमारे ऑलरेडी इसमें जो सोडियम रहता है ना, तो एक्सेस सोडियम हो जाता है। जब एक्सेस सोडियम हो जाता है तो वो जो ब्लड का कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें वो सोडियम ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोग अचार खाते हैं, अचार में नींबू, ये सोडियम ज्यादा रहता है, पापड़ रहता है, पापड़ में ज्यादा सोडियम रहता है। कोई लोगों को आदत रहती है कि ऊपर से वो नमक डालो, तो इसके लिए सोडियम हमने ऑप्टिमम इसमें यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, वो चक्कर आने का आपने दूर कर दिया, अभी मैं रिलैक्स हो गई। हाँ नहीं, और आप प्राणायाम भी अच्छा कीजिए, प्राणायाम से भी आपका कम हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे आसन आप बढ़ाती जाइए। एक चीज और सर है पूछना, कि हाइपरटेंशन की एक बार दवा शुरू होती है तो फिर वो हमेशा चलती है ना? हाँ, अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो बहुत चलती है, लेकिन कैसे कि वो, यदि हम बोले कि तुम दवा बंद कर दो थोड़ा ठीक हो, तो वो ठीक नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप कम कर सकते हैं। आपने वो रेगुलर नापना है और आपके डॉक्टर को बताना है कि अभी मेरा ब्लड प्रेशर आप देखिए, मैं आपके यहाँ, या महीने में आप भी खुद चेक कर लीजिए। और आपको यदि लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर अभी काफी कंट्रोल में है, तो आप वो डॉक्टर की सलाह से उनको पूछ के, वो उनको पूछ सकते हैं कि भाई अभी मेरा थोड़ा, मुझे चक्कर नहीं आ रहे, मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं गोली कम करूं, डोज कम करूं क्या सर, आप करते होगे? तो मैं कम करती हूँ। एकदम सडनली गोली तो नहीं बंद करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह से यदि आप करते हो, और उनको बता भी सकते हो कि मैं ये सब कर रही हूँ तो उससे मेरे को फर्क हो गया है, और मेरे ब्लड प्रेशर में मुझे लग रहा है कि मुझे बाकी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप यदि डॉक्टर की सलाह से आप गोली कम कर सकते हैं। और यदि उसे क्या मनोनिग्रह या आपके मेंटल ऐसे पावर होगा, विल पावर होगा, तो गोली बंद भी हो सकती है। लेकिन इट डिपेंड्स, इट टेक्स टाइम, वो जो उसे जरा टाइम लग सकता है।
वो ऑब्जर्वेशन में ही हम कम कर सकते हैं, तो वो ठीक रहेगा, लेकिन हो सकता है ये योगा और प्राणायाम से ये कुछ चीजें हो सकती है, उसमें ये भी हो सकता है। और जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, सब योगा से सब कुछ अच्छा होता है ऐसा नहीं है, जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट है वहां तो लगती है, लेकिन जब कोई डिसीज नहीं है तो डिसीज न होने के लिए या डिसीज कंट्रोल होने के लिए हमने ये करना सब जरूरी है। तो आप जरूर ये कीजिए, वो देखिए आपको कितना मॉनिटर करके 2 महीना 3 महीना 4 महीना में, डॉक्टर को पूछ के आप कम कर सकते हैं। डॉक्टर भी यदि है तो डॉक्टर भी सलाह देगा आपकी, ठीक है आधा करके देखिए, कम करके देखिए, रिजल्ट देखेंगे। ठीक है सर, कुछ अगर सवाल नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो देन वी कैन क्लोज इट। Very nice and informative sessions, Dr. Suhas sir. Very nice. Thank you so much. So again, I thank the Aarambh Yoga, Sushma ma'am, who is a motivational force. Means मैंने तो काफी सीखा उनसे, सीखते ही रहूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। I'm very much thankful to her and the Aarambh Yoga Institute. I thank Vishnu Rao sir ji also. I thank again Kiran for introducing me nicely. So, and I thank all of you for listening me for 1 hour. I'm very much thankful to you. आपको यदि उससे फायदा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। Thank you sir, thank you. We will, and there's a feedback form which is put in the chat box. You can reply to that, and we'll close with the prayer. Anyone can take the prayer in the group who would like to. Maybe Kiran ji or Dipali ji, I mean, any one of you can. We'll close it. Dipali ji, huh? Spine stretch. Close your eyes. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramayah. Sarve Bhadrani Pashantu. Ma Kashid Dukha Bhag Bhave. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, cup your eyes, gently remove your hands and slowly open your eyes. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Dipali ji. Thank you very much. Very nice session. Thank you, Suhas sir. Thank you, everyone. Okay, we'll close the session now. Yeah.